Welcome to HitBullsEye. My name is Prabjot Singh. Today we are going to start the session of Bulldoze weekly topic of current affairs, weekly issues. So what we are going to do now, we'll cover up one of the very important issue of a week, right, which is very much important for your exam point of view, right? So we'll cover up the past aspect, the present aspect, and the future aspect. So we'll cover up all the aspects and what is going to happen in future, right? So जो न्यूज मीडिया में होती है, सोशल मीडिया में होती है या प्रिंट मीडिया में होती है, तो आई विल ट्राई टू डीकोड दैट न्यूज फॉर यू. आई विल ट्राई टू गिव यू द इंफॉर्मेशन एंड द स्टोरी बिहाइंड दैट न्यूज, जो कि इट इज वेरी लेस अवेलेबल इन द सोर्सेज विच इज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन इश्यूज को, उन रिसोर्सेज को बड़ा डीपली एनालाइज करके आपके लिए इसको सामने पेश करूं. उसके बाद we'll cover up all of the topics in a very detailed manner. We'll cover up all the aspects of that news and what is the hidden story in that news. So today we are going to cover up the topic that is Russian-Ukraine crisis. You know, this Russian-Ukraine crisis is very much in news because on 24th of February, Russia started its invasion in Ukraine. So because of that, so for the last 20-25 days, it is very much in news. तो इस क्राइसिस का, इस वॉर का रीजन क्या है? तो ये कोई एक प्रेजेंट रीजन नहीं है कि ये एकदम से ये हो गया, नहीं. ये बहुत पहले से, इट इज अ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. जब से यूरोप बना, यूरोपियन यूनियन से भी बहुत पहले, जब से यूरोप की फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग में 14-15 सेंचुरी, उसके बाद से कैसे ऐसे इवेंट्स आए हैं जो रशियन फॉर्मेशन, यूक्रेनियन फॉर्मेशन एंड द प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट, उसका मेन कारण बना. मैं उसको डिस्कस करूंगा. उसके प्रेजेंट एस्पेक्ट की, अभी प्रेजेंट उसके कारण क्या बने कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है कि इसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका यूएसए की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी और खास करके इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा. तो इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रशियन यूक्रेन क्राइसिस. तो इसको समझने से पहले हमको यूरोप के मैप का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब जो रशिया है, रशिया बेसिकली पूरा का पूरा यूरोप में नहीं आता. रशिया का लगभग से लगभग 35-40% ऑफ हिस्सा यूरोप में आता है, बाकी का हिस्सा जो है उसका एशिया में आता है. बट वी कंसीडर रशियन एज अ यूरोपियन कंट्री. रशिया के बिल्कुल देयर इज अ माउंटेन चेन कॉल्ड एज यूराल माउंटेन चेन. यहाँ पे इधर थोड़े से इस साइड पर यूराल माउंटेन चेन है. उराल माउंटेन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन. तो इस यूराल माउंटेन चेन ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप को वो डिवाइड करता है, राइट. सॉरी, ईस्टर्न रशिया और वेस्टर्न रशिया को वो डिवाइड करता है. तो ईस्टर्न रशिया वाले एकदम साइड देखें. सो रशिया की फॉर्मेशन, बेसिकली ये लोग कौन थे, हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दिस इज होल रशिया एंड यू विल फाइंड यूक्रेन ओवर हियर. दिस इज यूक्रेन. यूक्रेन की जो neighboring countries is Moldova, then you will find Romania, then is Hungary, Slovakia, Poland, Belarus, then Russia. So these are the neighboring countries of Ukraine, and below Ukraine you will find Black Sea, which is very much important, right, for the for a strategic point of view, military point of view, and Sea of Azov. These are the two seas, and this Sea of Azov and Black Sea is connected by Strait of Kerch. The Strait of Kerch, ये बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि स्टेट ऑफ कर्च बेसिकली कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज, दैट इज सी ऑफ अज़ोव एंड ब्लैक सी. नाउ व्हाई दिस सी ऑफ अज़ोव एंड ब्लैक सी इज इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, व्हाई क्रीमिया इज इंपॉर्टेंट, दिस पेनिनसुलर पोर्शन, दिस इज क्रीमिया, and Crimea was also very much in news. So we'll cover up why Crimea is important for Russia, why Crimean annexation leads to an anger in the European countries and all. तो इन सब चीजों को समझने से पहले हमको यूरोप की हिस्ट्री को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये रशिया कैसे बना, जो बेसिकली रशिया में क्या है कि देयर इज अ वॉर ऑफ एथनिसिटी, राइट. रशिया में बोले, यूरोप में बोलो, वहां पे एथनिसिटी की बहुत बड़ी वॉर चलती है. जैसे हमारे, अगर आप एशिया में अगर आप देखोगे, मिडिल ईस्ट में देखोगे, वॉर ऑन रिलीजन, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म या इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, ये कन्फ्लिक्ट चलते हैं. वैसे ही यूरोप में जो बहुत टाइम तक कन्फ्लिक्ट चलते रहे, वो द कन्फ्लिक्ट वाज एथनिक कन्फ्लिक्ट. दैट कन्फ्लिक्ट वाज एथनिक कन्फ्लिक्ट. चाहे वो रोमानियन एथनिक की बात हो जाए, कोसोवो एथनिसिटी की बात हो जाए, फ्रेंच एथनिसिटी की बात हो जाए, या यूके एथनिसिटी की बात हो जाए, तो वहां पे एथनिक क्लैशेस बहुत ज्यादा रहे हैं. तो उन एथनिक क्लैशेस में एक वहां पे एथनिक ग्रुप, उसको स्लैविक बोल देते थे,
There is a group called as Slavic. Basically, Slavic are those people. आपने शायद movies में सुना होगा Vikings. Right? They were Vikings. There is a web series on Netflix also about the Vikings. Vikings were the people from Sweden. ये स्वीडन से लोग थे बेसिकली. So after that those people were shifted to यूक्रेन, कीव की तरफ शिफ्ट हो गए. तो यहाँ पे इस जगह को बोला गया कीवियन रूस. उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य किंगडम बनाया जिसको कीवियन रूस बोला गया. अब इसका हिस्टोरिकल कंसेप्ट ये है कि at this moment there was a Mongolian invasion which was started in Europe. Mongolian invasion around 15th century AD, mid of 15th or 16th century के आसपास Mongolian invasion was at its peak. जब चंगेज खान and all they were invading to the Indian side also, the Asian side also, and the Central Asian countries also. In the same way they want to expand their empire to Europe, the Mongolians and all, because at that time the Asian side was connected with the Silk Road. तो सबका उस टाइम पर जितनी भी बड़ी बड़ी एम्पायर्स आपको दिखेंगी वो हमेशा सिल्क रूट के आसपास ही दिखेंगी, चाहे वो मुगल एम्पायर हो जाए. उससे पहले इवन चंद्रगुप्त की मौर्यन एम्पायर की अगर बात करें, बक्तियन एम्पायर की बात करें, गौरी, गजनवी, all these empire were around the Silk Route. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रेड रूट हुआ करता था, the trade route was very much all empires want to control that trade route, क्योंकि जिसके हाथ में ट्रेड रूट है उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है. आज के टाइम पर ट्रेड रूट क्या है? सी है. तो दैट्स व्हाई आज के टाइम में जिसकी नेवी स्ट्रॉन्ग है वो सुपर पावर है. ठीक है. सो अब मंगोलियंस को अगर यूरोप पे कब्जा करना है तो उसके रास्ते में कीव आया. तो दैट कीव वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द मंगोलियंस. सो देयर वाज अ किंग इन द कीवियन रूस. ही वाज कॉल्ड एज इवान द टेरिबल. Ivan the Terrible. Ivan the Terrible was very greatest, you can say that is a very good warrior. He was a great soldier and he was a king, and he is considered the first king of Moscow. क्योंकि जब मंगोलियन इन्वेजन होती है, मंगोलियन इन्वेजन के बाद उनको लगा कि हमको हमारी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में उनको लगा कि सबसे अच्छी डिफेंस क्या है, क्योंकि ये जो सारा का सारा एरिया है इसको बोला जाता है ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स. ये ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स है. और प्लेन्स में डिफेंस बनाना जो होता है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो प्लेन्स में अगर डिफेंस बनानी है तो सबसे अच्छी डिफेंस क्या है? एरिया वाइड हो. क्योंकि वो अगर एक फोर्ट होगा तो इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट देयर इज अ ह्यूज एरिया. सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी फोर्सेस कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, यू कैन फायर एट देम थ्रू गन्स और थ्रू आर्टिलरी गन्स एंड ऑल. तो इसीलिए इवान द टेरिबल ने he adopted the policy of expansionism. So when he adopted the policy of expansionism, so they set up their capital at Moscow. So Ivan the Terrible was considered as the first king of Moscow, right? So how they started expand? So they expanded in a way they touched the western side of Pacific Ocean till from the China till the eastern side of the western side of the they touched the western side touched with the eastern side of the Europe, this side. So this was the thing. तो रशियन की ये डिफेंस लाइन ही ये है कि जितना बड़ा एरिया होगा तो उसके लिए डिफेंस बनानी उतनी ही आसान है. तो दिस एक्चुअली हेल्प्ड इन वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन जर्मन्स इन्वेडेड रशियंस इन द ऑपरेशन बारबारोसा. ओके, तो दिस वाज अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ इवान द टेरिबल. इसी के बाद एक और राजा आता है 17th सेंचुरी के आसपास. 18th सेंचुरी के आसपास there was another king which was called as Peter the Great. Peter the Great, he also adopted the same policy of Ivan the Terrible, but Peter the Great adopted a new policy which is called as warm water policy. Warm water policy. Okay, a warm water policy क्यों? Why warm water is important for Russia? अब आज के टाइम पर जितनी भी रशियन जियोपॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी व्हिच इज कॉल्ड एज वार्म वाटर पॉलिसी. नो, व्हाट इज दिस वार्म वाटर पॉलिसी? Now Russia has a geographical disease. Now what is this geographical disease? In the southern side of the Russia you will see there is a land, there are the countries, right? Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, you will find Afghanistan, Pakistan, Iran, then India on this side, right? At the upper side you will find Arctic Ocean which is frozen whole of the year, right? In the western side, eastern side of the Russia is a Vladivostok. Vladivostok is basically partially open. Vladivostok is a port, very important port for Russia.
at the eastern end. So it is partially open, partially closed, right? At the western side of the Russia, the Europe, these are all the capitalist nation. So because of communism and versus capitalism, तो वो वहां पे ट्रेड करने में इनको दिक्कत आती है. तो रशिया के पास सिर्फ दो ऐसे ट्रेड रूट्स बचते हैं सी के थ्रू जो ट्रेड उससे कर सकता है. एक बनेगा बाल्टिक सी, दूसरा बनता है ब्लैक सी. नाउ यू गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रीमिया. व्हाई रशिया इन्वेडेड क्रीमिया? क्यों? क्योंकि वो कहां पे ओपन होता है? ब्लैक सी के ऊपर ओपन होता है. और जब ये ब्लैक सी के ऊपर ओपन होगा, ब्लैक सी पे ओपन होगा, तो एक साइड ब्लैक सी की ओपन होती है एशिया में, दूसरी साइड ब्लैक सी की ओपन होती है यूरोप में. तो यू कैन सी हाउ स्ट्रेटेजिकली ब्लैक सी इज इंपॉर्टेंट. एंड बाल्टिक सी ओपन होती है पूरी की पूरी नॉर्थ यूरोप में. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई बाल्टिक सी एंड ब्लैक सी इज इंपॉर्टेंट. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रशिया and why how the Russian foreign policy is totally designed. This is only designed on a single way, that is called as black water policy. This is called as warm water policy. तो इसीलिए रशिया पूरी दुनिया से भर जाएगा, कभी क्रीमिया को छोड़ेगा नहीं. क्योंकि अगर उसका कंट्रोल बाल्टिक सी और ब्लैक सी से अगर खत्म होता है तो रशिया विल बी अ लैंडलॉक्ड कंट्री. उसको ट्रेड करने नहीं दिया जाएगा. उसकी इकोनॉमी विल बी शैटर्ड. रशियन इकोनॉमी विल बी शैटर्ड. द रशियन इकोनॉमी विल बी डिस्ट्रॉयड. सो this is a small story, this is a small history behind Kiev, Moscow, Ivan the Terrible, Peter the Great, and the importance of Black Sea and the Baltic Sea, right? अब जो present conflict शुरू होता है, that present conflict started with ending of the World War II, that is 1945. The two important countries, the world divided, the world after World War II, the world was a bipolar world. Before World War II, it was a multipolar world, Germany, Austria and all. Now it's a bipolar world. One is USA, जो कि democracy plus capitalist. Democracy plus capitalist. Russia, communism. Both the fundamentals of both of these ideologies is totally opposite, right? अब जो लड़ाई पैदा हुई दोनों में, दिस इज बेसिकली, इफ यू सी द बैटल बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज नॉट अ बैटल बिटवीन दीज टू कंट्रीज और द यूरोप. दिस इज अ बैटल बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म. अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो हमारा हमको पूरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ लग जाएगा. So after World War II, the Cold War was started. The Cold War was a period 1945 to 1991. So there's geopolitical tension between Soviet Union and its satellite states, the Eastern Europe. अच्छा, अब Eastern Europe में क्यों? क्योंकि after World War II, the countries where Russians invaded, it's on the eastern side, and the countries where the Allied forces, that is US forces, UK and French forces, they occupied the western part of the Russia. So western part of the Russia जो था, they become democratic capitalist, and the eastern part of Europe था, that contains Poland and all, Ukraine, Poland, Romania and all, they became communist. Lithuania, Estonia, Latvia. So that division of capitalism and communism is called as Iron Curtain, right? So the term cold is used because there was no large scale fighting directly between these two sides. तो ये कोल्ड वॉर मतलब उन्होंने अगर हथियार बना लिया तो एक, उन्होंने अगर मिसाइल टेस्ट करी तो ये दो कर देंगे, अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो हाई पावर इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब वो दूसरी कंट्री टेस्ट कर देगा. तो दिस काइंड ऑफ अ वॉर कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साइड पर लेके आना. इवन कि दिस कोल्ड वॉर यू विल ऑब्जर्व इन इवन द ओलंपिक्स आल्सो, कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती थी किसके ज्यादा मेडल्स है. आजकल की जो कोल्ड वॉर इट इज बिटवीन यूएसए एंड चाइना, क्योंकि अब चाइना और यूएसए के बीच में फाइट होती है फॉर द मेडल्स, फॉर द स्पेस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो World War II के बाद in 1949 an organization was formed which is called as NATO, that is North Atlantic Treaty Organization. The only purpose of the NATO was to contain Russia in the European side, because USA don't want the Russian influence. There will be a Russian influence on the western side of the Europe also, because they were pro-American, pro-capitalist and all. So they want to contain Russians. So therefore 1948 mainly the countries of Western Europe signed the Brussels Defense Treaty promising the military collaboration in case of war. So later on Brussels Defense Treaty was joined by the USA, Canada, Poland, Portugal, Denmark, Iceland, Italy and Norway.
So this led to the formation of NATO, North Atlantic Treaty Organization, in April 1949. So in this treaty, there is a commitment that in future, if Russia or any other country attack the NATO countries, so all the countries will form a collaborated military, and it will be considered as attack to the other countries as well, right? It's a kind of a military alliance. So in that, to counter NATO, Russians made another pact which is called as Warsaw Pact, because Warsaw was the capital of Poland, and Poland was pro-Russia at that time. So they signed a pact which was called as Warsaw Pact. So your Warsaw Pact in 1955, it was signed between Russia and the other and her satellite states shortly after West Germany was admitted to NATO. So the pact was mutually defense agreement which Western countries perceived as a reaction against the West Germany membership of the NATO. मतलब आपने कर लिया तो ठीक है, अगर रशिया ने करा तो वो गलत है. So this kind of a thing, or the mindset of those countries. So now what happened in 1991 या 1988 के बाद क्या होना शुरू हो गया? There was a Soviet-Afghan war. Soviet-Afghan war leads to destabilization in Russian economy. जब रशियन इकोनॉमी बहुत बड़े तरीके से डिस्टेबलाइज होगी, तो जो सैटेलाइट स्टेट्स थी रशिया की, they also shattered, they also destroyed. And in slowly starting from 1988 till 1991-92, total 15 countries of USSR, they get separated. Ukraine was one of them, Belarus, Latvia, Estonia, Lithuania. Here the 5 stans in the Central Asia and all, and Russia could. So these countries were separated, and there was a again a friendly pact between those countries. So Ukraine now became the second largest country in the Europe, and but the GDP of Ukraine was very much less. So this was the reason. The main reason was Soviet-Afghan wars, because obviously some Soviet-Afghan war was totally sponsored by the US. The Mujahideens were created by the US intelligence and the Pakistan, with the help of Pakistani intelligence, and they provided weapons, they provided them money, and they just hammered Russians in that 10-year war. And then in the root cause of this crisis basically started with the breakup of Soviet Union. So in 1991, when the Ukraine was separated from Russia, most of these atomic weapons, the nuclear weapons, were in Ukraine at that time. But with as a gesture of goodwill, you can say that Ukrainians returned those nuclear weapons to Russia, and they get an assurance from Russia in the future conflict, right? कि आगे हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो there will be a mutual peace treaty between Ukrainians and Russians. So a former Soviet Union republic had the 3rd largest atomic arsenal in the world after USA, Russia, then Ukraine. So worked with Ukraine to denuclearize the country, and in a series of diplomatic agreements. So Kyiv gave its 100 of the nuclear warheads back to the Russia in exchange for security assurance that protected it in the form of potential Russian attack. But so Russian grievances against the US and the Western Europe go back more than 20 years. Now what had happened in 1994, there was a pact between Russia and the US, and the US assured Russians that we will not expand even 1 inch towards east, that is towards Russia. But again, they backed off from their words. What they did, they admitted Latvia, Estonia, and other small 7 to 8 countries into NATO, which again shows the eastward expansion of NATO. Now, NATO का main purpose क्या था? Russia को contain करना, USSR को contain करना. Now, the purpose of NATO was fulfilled in 1991, right? But उसके बाद भी Russia is considered as an adversary to US and the primary threat to Europe and USA. So Russia was opposed to the expansion of NATO and a Cold War era grouping to include former communist countries of the Central and the Eastern Europe, जो मैंने अभी आपको बताया, especially into the former Soviet Union. In 1997-2004, NATO expanded to and included the former communist country despite Russian objection. But वो हटे नहीं,
अब धीरे धीरे ये आग और ज्यादा बढ़ती रही। 2008 में जॉर्जिया में भी अटैक हुआ, रशिया ने इन्वेजन करी। जैसे अभी यूक्रेन में इन्वेजन करी ना 2008 में, जॉर्जिया में इन्वेजन, क्योंकि जॉर्जिया बोल रहा था कि भाई हम नाटो में मेंबर बनेंगे, क्योंकि जब कोई कंट्री नाटो की मेंबर बनता है तो नाटो की फोर्सेज विल बी स्टेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड यूएसए कैन डिप्लॉय दैट मिसाइल्स इन नाटो। ठीक है, उससे फिर ऑब्वियसली इट विल बी थ्रेट टू रशियन नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज जब तक रशियंस अपनी मिसाइल यूएसए में मारेंगे तो 10 मिसाइल रशिया के ऊपर आगे न्यूक्लियर मिसाइल वहां पे गिर जाएंगी, है ना। Obviously they have to protect themselves. So after 2004 there was an orange revolution in Ukraine. So the pro Moscow, he was also ex-president of Ukraine, that is Viktor Yanukovych, was replaced by anti-Russian Yushchenko, who wanted closer ties with Europe Union, right? But Yanukovych was supported by the Russians because being a neighboring country of Russia, ये कभी भी Russia will not accept कि Ukraine goes into the basket of European Union or the NATO. Then in 2010, pro-Russian Yanukovych regained the presidency in 2013, stopped negotiation for an association agreement with the European Union, right? तो इसके चक्कर में जो लोकल यूक्रेनियन पॉपुलेशन थी ना, मोस्टली यूक्रेनियन पॉपुलेशन, यूक्रेन के ना बिल्कुल सेंटर से एक ना नदी निकल रही है, उसका नदी का नाम है नाइपर नदी। तो नाइपर रिवर के ईस्टर्न साइड पे ज्यादा रशियन स्पीकिंग है, द कल्चर इज टोटली सेम लाइक ऑफ रशियंस, एंड वेस्टर्न साइड पे यूक्रेनियन बोलते हैं, बट वो भी बहुत कम है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट कल्चर एंड रशियन स्पीकिंग पीपल, यू कैन से दैट they don't want to be a part of Russia, जो कि बताया जा रहा है, they want to be a part of Ukraine, because वहाँ पे एक plebiscite रेफरेंडम हुआ था, तो they wanted Ukraine to be an independent country, right? So which led to अच्छा, so actually यूक्रेनियन वांट कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने, क्योंकि इकोनॉमी बहुत वीक है, अगर वो मेंबर बनेगा तो इनकी इकोनॉमी में अच्छा बूम आएगा। बट बिकॉज ऑफ विक्टर यानुकोविच, he was a pro Russian and Russians don't want कि वो यूरोपियन बास्केट में जाए, तो he backed out from this negotiation and backed out from negotiation to entry into NATO. But 2014 में he ran from Ukraine, right? So in that protest what Russians did, Russians next Crimea, गुस्से में आकर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, राइट? जस्ट टू गिव मैसेज टू NATO एंड जस्ट टू गिव मैसेज टू यूएसए कि अगर आपने फिर से कोई ऐसा किया तो वी विल एनेक्स मोर। बट अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, दैट इज Volodymyr Zelensky, he was an ex-comedian and actor who became the president of Ukraine. He is now pro-Russian, right? Sorry, he is now pro-European and pro-NATO, and वो बहुत टाइम से बोला कि I want to be a member of NATO, I want to be a member of European Union. तो he's like provoking Russians, right? वो provoke कर रहा है, और provoke करवा कौन रहा है? NATO forces and European, that USA, the European Union, USA, you can say that they provoking Russia through Ukraine, बार-बार ऐसे बयान दिलवाकर। So now in the end, now 2022 Russians invaded Ukraine. मेन रीजन मैंने आपको बता दिया, नाटो की इंटरफेरेंस। बट अब पुतिन चाहता क्या है? क्या पुतिन पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा जाता है? नहीं। पुतिन बेसिकली वांट्स, द फर्स्ट पर्पस इज टू डीमिलिटराइज यूक्रेन एंड टू डीस्टेबलाइज द यूक्रेनियन गवर्नमेंट, ताकि वहां पे प्रो रशियन गवर्नमेंट आए, राइट? दूसरा, he also wants forces the US and NATO to take Russia's objection and concern seriously. Obviously रशिया का भी कंसर्न है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, चाइना हमारे पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पंजाब में, लाहौर के पास अपनी मिसाइल्स को फिट कर दे, राइट? सो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन टू इंडिया। ऑब्वियसली जब हम अपनी एक मिसाइल बीजिंग में मारेंगे, वो अपनी 10 मिसाइलें हमारी दिल्ली पे वो उन्होंने हिट कर दी होंगी, राइट? तो सेम रशियंस की भी यही कंसर्न है कि नाटो अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना करे और फर्दर एश्योर करे द अदर रेस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दे डोंट बिकम द मेंबर ऑफ नाटो। बट अगेन अब यूएसए जी की चलती है उस एरिया में, तो नो वन कैन डू एनीथिंग। सो रशिया आल्सो एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, चाइना ऑन देयर साइड। अब चाइना का भी यहाँ पे रीजन में इंटरेस्ट है। चाइना वांट टू डिस्टेबलाइज यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, ताकि वो एक सुपर पावर बन के उभर के बाहर आए।
इसमें चाइना का इंटरेस्ट है. इन शॉर्ट चाइना बंदूक चला रहा है रशिया के कंधे के ऊपर रख के. सो यूरोप इंपोर्ट्स मोर देन 40% ऑफ इट्स गैस एंड ऑयल फ्रॉम चाइना. तो रशियंस व्लादिमीर पुतिन की ये एक असेसमेंट थी कि यूरोपियन यूनियन इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा. रीजन बीइंग क्योंकि वो ज्यादातर जो 40% जो ऑयल और जो नेचुरल गैस है इट इज डिपेंडेंट ऑन दे आर डिपेंडेंट ऑन रशियंस. बट ये एक असेसमेंट गलत हो गया. तो उन्होंने बहुत से बुरे सैंक्शंस they imposed on Russians, so which is beneficial for Moscow too. Hence, many countries in Europe, including the Germany, are not keen on very severe sanctions, but they made a sanctions, they put a sanctions, and in the end, Russian in a very huge crisis, right? तो उन्होंने स्विफ्ट का सैंक्शन भी उन्होंने लगा दिया, ट्रांजैक्शन का सैंक्शन भी लगा दिया, and other sanctions by the even by the European Union, by the NATO forces, and by the USA, even by the China, even by the Japan, even by the Australia. तो यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है. Now what will happen to India? तो इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि यूक्रेन से एक तो बहुत ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स थे, इंडियन डायस्पोरा 20,000 अराउंड. So India wants to evacuate those people from there. The students are there, वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पे जाते हैं. Secondly, हमारा इम्पोर्ट बहुत है, wheat, the sunflower oil and all. तो हमारा इम्पोर्ट इसीलिए अब नोट करो पिछले 10-15 दिन में 25 से 30 रुपए इसका रेट बढ़ चुका है ऑलरेडी. Secondly, India is dependent on defense equipment and defense spare part on Russia. But on the other hand, India is an ally of a strategic partner of USA in the Indo-Pacific region. There are two superpowers. In 1961, there was a policy which was moved forward by Jawaharlal Nehru, that is non-aligned movement, right? Non-aligned policy. So India is again following the same policy. Ki we don't want to be a part of any of you. We are out of it. But yes, India says that they are not, justifying the annexation of Russians. क्योंकि इंडिया के ऊपर भी बहुत से ऐसे अटैक्स हुए हैं. The parliament attack was in India. There was a regular interference of Pakistani-backed militants in Kashmir, in Punjab, and there was a 26/11 attack. तो हमने किसी के ऊपर अटैक करने तो चले नहीं गए, है ना? India didn't launch a full-scale invasion of Pakistan. We focus on our health system, we focus on our education system, we focus on our development, we focus on our economic growth, and you can see now where India is. Now, India has its own cryogenic engine. India is doing very good in the space technology. We launched 104 satellites in a single go. We have our own defense manufacturing. We are one of the fastest growing economy. Why? Because we didn't focus on this military invasions and attacking on any other country. So this is a difference. So I'm not justifying that. But on the other hand, we can also say that the actions by the NATO and the US leads to this action of Russians on Ukrainians. So this was the whole issue. This is the whole crisis between Russia and Ukraine. Now it's a matter of time what will happen in future. But as of now, if we see, Russians will definitely destabilize Ukraine. It will be destroyed, and it will be demilitarized, and the government will fall within few time. So we'll meet next time with the same session, and we'll pick up another very important topic in the next class. So if you like this video, please share this video, like this video, and subscribe this channel and click the bell icon. So till then, I'm signing off now. Thank you.